Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, friends. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Well, I'm going to start now. So now you can see this is your lesson plan of today's session, in which I am going to discuss with you. Our subject name is Informatics Practices, and the chapter number 1, that is Computer System, and it will be of 40 marks, in which we will see that the topics, these topics we will cover: data, processing, information, IPO cycle, and CPU. And the main objective of today's topic is, today's session is to specify these all topics like data, processing, information, IPO cycle, and understanding the functional components of the computer system. That we will see. Though we understand much more about these all things, then also, as I told you yesterday also, we will have to learn all these things in systematic manner, not in random order. Anything, any definition, any type of theory, no. We will learn all these things in a proper way. So now the tools that we will use for describing these all topics, I'm going to use one PowerPoint presentation and videos also, as well as discussion with you all. So these are the various tools and activities that we will use, and these are the learning outcomes of this session. The learning outcome will be at the end of the session, you will be able to understand the various types of components of computer system, as well as the functioning of the computer system in the form of IPO cycle. You might be knowing these all, but then also we'll see that. And I will show you some videos also, and interesting videos I have brought for you. And you will, wherever, keep your notebook also and pen and paper ready, so that whenever I will tell you to write down, you will write down also. And if possible, you can take the screenshot also, and through that screenshot, you can write further after this session also. आप बाद में भी लिख लेना, कोई जरूरत नहीं कि अभी ही लिखो. आप स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको, आप स्क्रीनशॉट लगा के आप लेके उसको रख लो, बाद में उसको लिख लो और स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देना. नो नीड टू कीप द स्क्रीनशॉट. अब देखो, लर्निंग आउटकम में हम लोग फाइनली यही सब समझेंगे कि हाउ, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, व्हाट आर द वेरियस, व्हाट, हाउ डज द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन, and the various units of CPU. If time will permit, then we will learn about the functioning of CPU also. तो ये सब चीज हम लोग शुरुआत में करेंगे. So now I just show you one. Okay, before this, let me ask from you first. Before I start the new slide, I ask from you, what is a computer? If I will have to define the computer, and if I will have to say that, what is a computer? How will you define computer? And not I'm asking about the usage. I'm asking what is a computer? Yes, from your side. Anyone? Anyone, right? What is a computer? Sir, Yes. so computer is an electronic device which takes the instruction in a logical manner and then gives us the output. Wonderful, wonderful answer. Wonderful, technically correct answer. Good. And anybody else? Thank you, sir. Anybody else? और कोई बताएंगे? Anybody else? कोई बताओ, और कुछ बताओ कंप्यूटर के बारे में, क्या लगता है कि व्हाट इज ए कंप्यूटर? What is a computer system? What is a computer? How will you define a computer? Specifically, one student told me that it logically takes some instructions, data from the user, and then what? Sir, हाँ, बोलो. sir, it assists us in our daily work. This is our daily work.
तो लेकिन ये थोड़ा लगता है ना कि यूज बता रहे हैं हम लोग, जैसे हम तो डेफिनेशन पूछ रहे हैं ना कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, और ये लगता है जैसे कि इट यूज टू एक्सेस आवर वर्क और एसेस आवर वर्क और यूज टू डू द वर्क फास्टली। तो ये सब तो उसका बेनिफिट एडवांटेजेस हो गया ना, उसका फीचर्स हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लेकिन एक्चुअली अभी जो आई डोंट नो हु टोल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट हु हैज टोल्ड द डेफिनेशन अर्लियर? Sir, Ayushi Kumari. Ayushi. Okay, Ayushi. Very good. Ayushi, just you told it is used to accept the data in logical manner and it performs some operations on that and displays the output. See, actually what happens, proper definition could be anyone. You can say in any way, it is an electronic device which are made up of many kinds of electrical and electronic parts, which are very fast, which are very accurate, which are used to perform our tasks in large volume of data can be handled, etc., etc., etc. तो कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना कि इट इज यूज टू टेक द डेटा एंड डिस्प्ले द आउटपुट, तो वो भी सही है, वो भी सही है, गलत बात नहीं है। इट इज यूज एक्सेप्ट डेटा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इट यूज टू कैलकुलेट, क्योंकि इट इज कंप्यूटर सिस्टम, तो इट ऑब्वियसली यूज फॉर कैलकुलेशन। तो लेकिन अगर सही से बोला जाए कि वी से हाउ टू डिफाइन अ कंप्यूटर, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। कि देखो तीन पार्ट में इसको डिवाइड करो, ठीक है ना। कोई भी चीज जो होता है कंप्यूटर में वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज व्हाट, इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम उस पर आएंगे फिर अभी, लेकिन पहले डिफाइन कर दे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। चलिए आप, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, प्रोसेस इट and produces the required information. If you will see, there are three words I have highlighted in red color. Why? To focus on these three words, because these three words are going to play not only to define a computer, but also the entire functioning of the computer system. On these three terms, the entire computer system depends. First is to accept data in logical manner, that is data, to accept the data. Second thing, in processing. So now I come to this point, what is data? चलो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, रुक जाओ, और मैं ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं करके रखना चाहिए था मुझे, मैंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग। ओके 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 ओके, चलो इतना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज डेटा, हाउ विल यू डिफाइन अ डेटा? चलो बताओ। इट इज अ डिस्कशन सेशन, ओके। So I am asking, what is data? How will you define a data? मैंने अभी हाइड कर दिया है, मेरा वाला डिफिनेशन बाद में आएगा। चलो कोई भी बोलो, कोयल। Sir, it is the raw material that we give, that we put input, that we give in a computer as an input, and computer process it. It is fact, figures, alphabet, numbers, which computer, which computer. Yes. Yes, correct, 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 100%. Oh, very nice, very nice. So I am showing you. I won't waste my time and your time also. Just see here. So it's what is your name? Amrita Kumari. Amrita Kumari. Amrita, Amrita, Amrita. Okay, very nice, Amrita. Wonderful answer. Okay, everyone knows it. Everyone knows it. Does not matter. You have not given answer. It does not mean you are not knowing. You are also knowing it.
First is that data is a collection of numbers, alphabets, facts, figures, etc. And it is also treated as a raw material for the computer system. Okay, any data like alphabets A, B, C, D, any digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, odd numbers, or any figures, any fact, any other type of collection of gathering of group of data, all are coming under data part. That is data. Okay. Now next thing I am going to ask from you. Okay, before that, ask from you. What is processing? How will you define a processing? How will you define processing? So processing is an instance of computer program that is being executed. Again, please repeat. So processing is an instance of computer program that is being executed. Okay, okay, very nice, good, good. Instructions of the computer program which are used to perform a particular task. Okay, anybody else? Processing can be the process to interpret the data which is given by the user as per his or her instruction. Wow, very nice, good, good, good. And anybody else? और कोई? चलो ठीक है, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने. प्रोसेसिंग इज अ सेट ऑफ, उसी को मैं सुधार के बोल देता हूँ, सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि प्रोसेसिंग होता क्या है. खच्चर बोलो, कोई बोल रहे हैं कुछ? ठीक है. प्रोसेसिंग मीन्स क्या कि वॉट एवर डेटा इज टेकन फ्रॉम द यूजर, आई जस्ट टोल्ड यू रॉ मटेरियल which has no meaning. Initially it has no meaning, but once some steps are taken on that raw data, once some activities are performed on that alphabets, numbers, digits, then it won't be raw, it won't be meaningless, it must have some meaning. But that set of activities, that set of steps that are taken on the data, what those steps, what those activities, we are hardly bothered. But I'm telling you, like, you have taken some numbers. Okay, any randomly, any number 9, 8, 5, 1, 2, 3, कुछ भी ले लो. And some steps are taken by the computer system on that data, like steps to verify, steps to check that whether to compare the values, or steps to organize the value, to bring it in a meaningful form. So those steps are set of activities, and that is known as processing. And who will take this activity? Who will perform these activities or set of activities? Certainly, we are not doing this. We are not writing this. We are instructing this. We instruct the computer to do that. By steps, we are not taking steps. Computer is taking these steps. So that steps are being taken by the computer, and that steps are processing. So I'm writing here. You just see here. You can see in the screen. This is processing. Okay, this is processing. The handling of data is known as processing. Or you can write one more line there. You can write one more line in the processing. We write from my side. The set of activities. The set of activities or steps which are taken on the data. The set of activities, you write now, the set of activities or steps which are taken on the data to produce the required and meaningful information. To produce
required and meaningful information. अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि हम अच्छा एक चीज पहले समझ लेते, उसके बाद हम इसको और करके देखते हैं। पहले इंफॉर्मेशन के बारे में कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। चलो, कि इंफॉर्मेशन मीन्स द रिजल्ट और आउटपुट that comes out of the computer system in meaningful and correct form is known as information. तो एक चीज इसमें है कि मैंने जो नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, the result or output that comes out of the computer system after processing. यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, after processing. So the result or output that comes out of the computer system after processing in meaningful and correct form is known as information. अब चलो हम लोग थोड़ा सा इसको और रिजल्ट करते हैं। अब मैं सपोज तुमसे एक बात पूछूं कि एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से मुझे तुम बताओगे कि कौन क्या है। How many of you know how to make a cup of tea at home? How many of you have made a cup of tea? Making tea? Anyone? Girl side? तुम क्या टी Yes, बनाने sir. जानते हो? वंडरफुल। क्या करते हो सबसे पहले टी बनाने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो सबसे पहले क्या करते हो बताओ? So तो boiling पानी उबलने water. देते हैं। अच्छा, बॉइलिंग वाटर करते हो। बॉइलिंग वाटर करते हो मतलब उससे पहले पैन को रखते नहीं हो क्या ये बर्नर पे? उसको लाइट नहीं करते हो? सीधे Yes, sir. पानी को डाल के ये कर देते हो? Yes, sir. ओके, No, sir. एकदम स्टार्टिंग से बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करते हो? पढ़ते हैं सर। You take one pen. In that pen, you will go and keep it on the burner, and then burner will be lighted. ये सब भी तो करते हैं ना? Yes, sir. In closed burner, we will keep the pen and we'll put the water and will be started boiling. वो तो नहीं होगा? अच्छा, उसके पहले क्या करते थे? थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे चलो, बताओ जल्दी बताओ। चाय बनाती हो ना घर में गर्ल्स? नहीं बनाती है? मम्मी बना के पिलाती होंगी तुम। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम जब किचन में जाती हो चाय बनाने के लिए, या मम्मी जाती है चाय बनाने के लिए, तो क्या होता है कि पहले मम्मी को तो मालूम रहता है कि टी लीव्स कहाँ है, मिल्क कहाँ है, शुगर कहाँ है, सब पता है। लेकिन तुम जब जाते हो पहला बार, तुम्हें तो पता नहीं रहता ना, तुम तो रोज रोज रसोई में जाते नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? वो रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ता है। और रॉ मटेरियल टी लीव, शुगर, वाटर, वाटर तो चलो मिल जाएगा तुम्हें, वाटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल्क, मिल्क भी मिल जाएगा फ्रिज में। तो तुम क्या करते हो? सब कलेक्ट करते हो। जब मम्मी से पूछते हो, मम्मी टी लीव्स कहाँ है? टी लीव्स पता नहीं चल रहा है, कहाँ रखा हुआ है। शुगर कहाँ है? शुगर कहाँ है? शुगर शुगर ठीक कर दिया। और तब तुम उस कलेक्टेड डेटा को, उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उस समय वो क्या है? रॉ मटेरियल। उस समय वो डेटा है, टी लीव्स, वाटर, शुगर, सब डेटा है। अब तब now I started burning the burner. I lighted the burner. I lighted the burner. What will happen? After that, I will keep the fan on that, and once I will keep water in that, putting water in that, पानी डाल दिया, and then I put the sugar, then sorry, tea leaves डाल दिया पहले, फिर milk डाला, फिर sugar डाला लास्ट में, फिर let it be boil. अब कुछ मैं स्टेप्स ले रहा हूँ कि मैंने उसको लाइटिंग किया, मतलब उसको लाइटिंग किया, उसके बाद बर्नर को के ऊपर रखा पैन को, फिर उसके बाद बॉईल किया। तो ये सब स्टेप्स को क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। एक चाय बनाने में खाली इंग्रेडिएंट्स ला के रख देने से थोड़ी हो गया, उसको डालना भी तो पड़ेगा जगह पे, स्टेप्स भी तो लेना पड़ेगा। खड़े खड़े सोचते रहेंगे तो चाय बन जाएगा क्या? अच्छा चलो, सब चीज हो गया। आफ्टर बॉइलिंग, after putting the sugar, after putting the milk, everything, the sugar is, sorry, the tea is ready. Now what you will do? Take a filter, in that filter you will just pour the tea, and that tea will be poured in that cup through the filter, and tea leaves will be filtered out. So ultimately we got a cup of tea.
और मैं उसको अपने मम्मी को या किसी को भी देना चाहती हूँ तो दे दूँगी। अब तुम जब कप ऑफ टी बना रहे थे तो ये इंफॉर्मेशन है, कप ऑफ टी इंफॉर्मेशन। अब जब तुम कप ऑफ टी बना रहे थे उस समय प्रोसेसिंग फेज में तुम जब एक शुगर ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम उस समय शुगर जब निकाले थे तो तुम शुगर के बदले सॉल्ट निकाल दिए, क्योंकि शुगर का भी कलर वैसा ही था, सॉल्ट का भी कलर वैसा ही होता है। तो तुमको लगा व्हाइट व्हाइट ही है, चलो डाल दिए और पता नहीं चला तुमको। अल्टीमेटली कप ऑफ टी तो रेडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट कप ऑफ टी इज नॉट एट ऑल करेक्ट। जिसमें शुगर डाले, शुगर के बदले सॉल्ट डाले थे, तो सॉल्ट वाला जो कप ऑफ टी है वो भी इंफॉर्मेशन है, वो भी एक कप ऑफ टी है, लेकिन दैट इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट जो आया that is not useful for anyone. That is not in that form that we can utilize that. That is that we can take the benefit of that. उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि every information, every output, every result, every output is not information. Information is that which is meaningful and correct. नमक डाल के चाय बना दिया तो वो भी चाय है, लेकिन वो चाय मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन जो तुम्हारा चीनी डाल के बनाए वो मीनिंगफुल है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, एंड दैट इज व्हाट आईपीओ साइकिल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आप लोग सब इसका एक ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देयर आर 3 phases in this. First is input phase, second one is processing phase, and third is output phase. मैंने अभी तीनों डिस्कस किया है आपसे, input, processing and output. In input stage what happens? Data is taken from the user. आप जब डेटा डालते हो तो दैट इज फर्स्ट स्टेज, और इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी ये नहीं बोल सकते कि आईओपी क्यों नहीं हो सकता, पीयूआई क्यों नहीं हो सकता, पीआईओ क्यों नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा पॉसिबल है आईपीओ। इट ऑलवेज मूव्स इन आईपीओ। Computer system always function in IPO cycle. ये आप एकदम लिख लो अपने कॉपी में। How does a computer system function? Computer system always function in IPO cycle. And I means input stage where data is accepted from the user. P means processing stage where the set of steps are taken. And output stage, the result or output that comes out of the computer system. Now, what are the functional components of the computer system? Next topic is components. We all know about the components, those parts, electrical and electronic parts that we see, we touch, hardware parts, which has some size, which has some volume, which we can touch. So these all electrical and electronic parts are your functional components. लेकिन हम लोग इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस, देन सीपीयू and then storage devices. Then I'm going to show you one video. And then Hello, in this video, we are going to understand how computers work. We have audio is clear? Yeah, audio is clear to all of you? already learned that computer Yes, sir. is an electronic device which processes instructions given by us. For example, you use your mouse to draw or use your keyboard to write mails on the computer. You can then ask your computer to print the amazing drawing you made on the computer or command it to send the email to your friend. So the computer takes in some input, does some processing on it, and then gives some output. This is called as IPO cycle or input process output cycle. Let's understand each of them. First is input. It is responsible for providing some information or instruction to the computer. It can be through mouse, keyboard, or even voice command through your speaker. Input is a combination of data and instruction. For example, you've given some numbers and asked the computer to do some mathematical calculations on it. Big banks, schools, business give even large amount of data to computers for processing, like processing exam results, money transfer, etc. All of these are input to the computer. Once the computer receives the input, it does the processing on it.
This is the responsibility of CPU or Central Processing Unit to do the work as per your instructions. A CPU has three main components. First is ALU or Arithmetic and Logical Unit, which is responsible to carry out arithmetic and logical instructions. Second is CU or Control Unit, which controls the sequence of instructions given by us. Third are some registers of fast memory where ALU stores its values while doing its calculation. CPU also works with main memory, also called as RAM or random access memory, which temporarily stores your instructions and data while processing. Once the processing is done, the computer gives the output, which could be displayed on your screen or monitor, or it could be printed on paper or as music on your speaker. Thus, the computer follows this whole cycle of taking an input, processing it, and giving the output, which is called as IPU cycle. Okay, friends. So now it is very clear from this video that how can we take the data first, then out processing, and then output, and CPU is also. What are the different functional components also, that becomes also very clear from this video. So next class I will tell you about the details of all these things. Don't worry. So today's time is about over. So in next class